Your voice is breaking, buddy. Hello, Assalamu alaikum, and welcome to Batta Fast with the greatest Pakistan attack that never was, Ahmer and Osman Samyuddin, and of course, Wasim Akram. बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने का. Wasim, we have, I think, 916 international wickets between us, as the saying goes, between all three of us, of which I think 916 are yours. Probably. Good guess. Very good guess. Yeah, I love how you say probably also. Like, we could have, me and Ahmer could have like a couple of wickets between us, who knows? बस चांस नहीं मिला मैं. वसीम भाई, मेरा पहला सवाल आपसे थोड़ा आसान सा है, Sure. मगर बड़ा अहम सवाल है. 1990s में सब कॉन्टिनेंट में हर दूसरे लौंडे के बर्गर कट या मशरूम कट हेयर स्टाइल था. इसमें आप कितनी जिम्मेदारी लेते हैं, क्योंकि मैंने तो अपने वो हेयर कट आपकी वजह से कराया था. हाउ रिस्पॉन्सिबल डू यू फील? I suppose 90s में I do feel responsible because I don't know मेरा किसने कराया था, because when I look at those pictures I say what the hell was I doing or was I thinking. But I suppose 93 में वो हुआ था मेरा कुछ ऊपर से अजीब सा पीछे से छोटा. Yeah, I think उतना भी फैशन का आइडिया नहीं था तब. तो वो जो अपना नाई कहता था लाहौर में, उससे हम करा लेते थे वैसा. सर ये नया फैशन आया, अच्छा यार कर दे. But I realize it now कि that wasn't a good idea. talk about that a little bit more. हम लोग बात भी करते हैं, आपकी कान की बाली भी होती थी. पाकिस्तानी Yes. बॉलर्स की हमेशा एक लुक एक बड़ी जरूरी चीज है. टॉक टू अस अबाउट दैट. मतलब आप कितना अवेयर थे कि यार मुझे एक जरा टाइट Smart बन movement. करना है? I just wanted to do something different, and I asked my wife, Huma, कि यार I think I should have a earpiece. He said, why? Are you okay? I said, I just gonna try something different, being bored. He said, okay, make sure it's on the left side of the ear. और वो 97 में जब तैमूर पैदा हुआ, I think in August, I उसके अगले दिन मैंने फिर उतार दी थी. I don't know why. I thought कि अब मैं dad बन गया हूँ, so might as well look the part. अब मैं adult हो गया था. Take it off. Yeah, that, I mean, अब हुआ नहीं था, but in my mind I thought I am. I think मुझे कोई और पाकिस्तानी प्लेयर याद नहीं है, या फास्ट बॉलर या बैटर, जिसकी एक ईयर स्टड हो. I don't think I remember anyone who's had one. Like, I don't know, आपके जमाने में और कोई था? नहीं, इतना कोई brave शायद नहीं था, because I suppose it's the backlash. You see, best thing was there was no social media. तो पता नहीं था लगता. लोग जो मर्जी कह दें. Who cares? Because अखबार का स्पोर्ट्स सवा पढ़ना होता था. I doubt कि वो they talked about ear piercing in the 90s, about cricket was more important. So आजकल के दौर में होता तो आज जिंदा गाड़ देते ही हमें आराम से. आप म्यूजिक जिंदा. वीडियोस में भाई आप हिट होते हाँ हो, हाँ. टच नहीं कर सकता. आजकल तो यार सोशल मीडिया, everybody's got opinion. I'm all for it. Opinion जरूर दो, but sometimes let go. Don't have to give your opinion on everything. I don't. I have a life actually. Maybe that's why. So, if I can, I'll ask the first kind of semi-serious question. Sure, sure. And this is one we put together. You know, a lot of the time, 90s में, when you were at your peak, I guess, बहुत सारे लोग कहते थे कि the game came too easy for you. Like, you were so talented, so naturally gifted. आपके लिए हर चीज आसान होती थी. Did that actually, like, did that put more pressure on you? Because, sometimes when you didn't perform, people would say, oh yeah, he wasn't looking interested. Itni uski talent hai. Like, it wasn't coming through. Always. Yeah, just to that, Wasim bhai, sorry, कि जैसे आप 96 और 99 का वर्ल्ड कप ले लें, तो even now people are like, नहीं, ये हो ही नहीं सकता कि वसीम इंजर्ड हो, ये हो ही नहीं सकता कि वसीम ने हरा नहीं दिया. क्या? He'll only lose if he doesn't want to win, which is not a चलो fair thing. पहले नॉन सीरियस आंसर देता हूं. अगर मैं 96 का नहीं खेला वर्ल्ड कप, बाकी 11 का छोले बेचने गए थे वहां पे. अब एक प्लेयर ठीक है, इट वाज एवरीबॉडी न्यू 3 days बिफोर इन लाहौर अगेंस्ट न्यूजीलैंड. आई गॉट 30 प्लस क्विक फायर. जो डेवन नाश को मैंने वो जो स्वीप खेली थी, फाइन लेग अप था, उसमें ये मसल पुल हुआ था. पता सबको था. आइडिया था कि प्रेस को ना बताएं ऑफिशियली, बिकॉज साइकोलॉजिकली इंडिया को कॉन्फिडेंस ना मिल जाए. दैट वाज द आइडिया. एंड व्हेन दे लॉस्ट एंड वी वर डूइंग वेल,
We were 115 for none in 15 overs, chasing 280 or 289, if I remember correctly. And it was a flat deck. And then obviously we buckled down. And wo blame nahi aaya. But again, I don't want to go back that time and, criticize my Yeah, ex-colleagues yeah. and all. But yeah, communication nahi thi, kuch blame game tha, lots of stuff. But, when people talk, this generation, जो तब मेरे ख्याल में नेपियों में थे, वो ऐसे बात करते हैं जैसे वो वहां पे उस वक्त इनसाइड ड्रेसिंग रूम थे. And that sometimes pisses me off. No, so But वही था कि did you sorry Osman, go ahead. no, go on, go हाँ. on. No, you go on, Ahmer, go on. या कि मतलब ये उस तरीके में जो आपके ऊपर तवक्कुआत थी कि यार नहीं इसमें इतना टैलेंट है कि ये कभी हार ही नहीं सकता है. How did you deal with that? Because obviously you're a human being, you're not. You see, talent, guys, as you know, हर किसी में किसी चीज का टैलेंट है या होता है. वो टैलेंट 4 साल 3 साल 4 साल रहता है. एंड हाउ टू prolong दैट परफॉर्मेंस स्लैश टैलेंट, उसको लंबा कैसे करना है. एंड दैट कम्स अप विद होमवर्क एंड हार्ड वर्क. अगर टैलेंट में मैं 17 साल 16 साल का था तो मैं 25 साल में वो टैलेंट तो लेके बगैर मेहनत किए नहीं जा सकता ना. सो गुड मेंटोर्स अर्ली ऑन इन योर करियर. गलतियां की मैंने, लाइक लॉरी, लड़का गलती नहीं करेगा तो जो यू सी वो क्या कहते हैं इंग्लिश में, मंकी सी मंकी डज. जो देखा आपने इर्द गिर्द, जो देखते हैं आपने इर्द गिर्द, अब वही करते हैं ना. So that's what I learned and that's what I did in the beginning. Lot of mistakes, lot of galtiyan, but as long as you learn from it, and I'm still learning. I'm still learning and I'm thinking out of the box, thinking out of comfort zone. और mentors ने बड़ी help की शुरू में, मेहनत कैसे करनी है, never be satisfied with your performance, move on, आज performance होगी, enjoy it today. कल का दिन जब आएगा तो ये परफॉर्मेंस पास्ट हो जाएगी. सो यू थिंक प्रेजेंट क्या है, मैंने फ्यूचर प्लान करना है. सो दैट दीज लिटिल प्रिंसिपल्स. एंड देन अब 8-9 साल मैंने काउंटी भी खेली है और पता नहीं 200 प्लस या 150-200 फर्स्ट क्लास मैचेस उनसे खेले हैं. सो वो विद और लंबे लंबे स्पेल किए हैं. इफ यू सी somebody said I don't know how many thousands of over I bowled in my career. So yeah, I was in the beginning सुनते थे talented है, but वो talent को अगले 17-18 साल चलाना भी तो था ना. And that is work hard, the simple principles. Did you ever feel, शुरू में, Imran used to talk about you so highly. Like Imran used to say openly to everyone कि यार ये जो वसीम आया है, he's the most naturally gifted player that I've ever seen. He'll be bigger than me, he'll be better than me. उसका अलग प्रेशर आपके ऊपर नहीं ज्यादा आता था? Like if somebody like Imran is saying it, and I know you were close, of course, but that pressure must have been crazy. I think no, it was. I took it positive way. That used to motivate me when I used to hear him in the press, and people used to tell me that that's what your captain was saying. Instead of कि मैं घबरा जाऊं कि कल क्या होगा, I used to really get motivated कि I have to prove him right, and that was a very positive sort of. I remember the incidents. I was bowling, if you remember, बहुत सारे नो बॉल वाइड बॉल्स बड़े हो रहे थे मेरे 92 वर्ल्ड कप में, about 40 plus I think no balls there wide, if I'm something like that. तो पर्थ में हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट मैच था ऑस्ट्रेलिया से, पर्थ में, and I think we won that comfortably. But I remember मैंने थोड़ी पेस कम की, कोशिश की कि जब वाइड बॉल हो रहे होते हैं, कंट्रोल नहीं हो रहा होता, तो बॉलर ऑटोमेटिकली थोड़ा स्लो करने की कोशिश करता है ताकि कंट्रोल आए. एंड मैं उस दिन जब दोपहर को मैच था, आई थिंक 2 o'clock स्टार्ट था पर्थ में. सो आई वोक अप, वेंट टू ब्रेकफास्ट. आजकल तो लड़के उठते ही नहीं है ना सारे, अब उठते ही सोते ही 6 बजे हैं. तो हम तो उठते थे, हमें तो डर के उठना पड़ता था खान साहब की वजह से. सो ब्रेकफास्ट में गए तो वो व्हेन यू आर यंग यू ओनली लुक एट द बैक ऑफ द न्यूज़पेपर, जो भी वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का था. सो वो बैक में स्पोर्ट्स सफा था, मैंने वो देखा तो मैसिव हेडिंग थी कि I want Wasim to bowl fast. I don't want him to worry about no balls and wide balls. So there was a very psychologically kind of press conference he did, जिसका मुझे नहीं था पता. So that gave me an added confidence कि कोई बात नहीं, मैंने भाग के आना है, जोर पेस से करनी है, वाइड नो बॉल हो जाए मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज कप्तान मेरे पीछे है. So that was really a good ploy. I read it myself and that gave me confidence. वर्ल्ड कप के साथ रहते हुए वसीम भाई, फाइनल में आपने जब इंग्लैंड के खिलाफ किया तो आप उनके साथ ज्यादातर प्लेयर्स इफ नॉट ऑल प्लेयर्स के खिलाफ काउंटी में खेल चुके थे.
नील फेयरब्रदर आपका कॉलीग भी था, उनमें Yeah. से कोई खिलाड़ी था जिसके खिलाफ आपकी कोई ग्रज, थोड़ा सा एक्स्ट्रा मोटिवेशन, थोड़ी राइवलरी ज्यादा थी? I suppose not really, but इंग्लैंड में मैं जब मैं टीम में आया था तो सम ऑड रीजन प्रॉब्ली नेचुरल था मेरे में या बॉलर्स में होता है या ऑब्वियसली मेरा यह था कि अगर मैं वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेल रहा हूं तो मैं विव पे अटैक करूंगा। अगर मैं इंग्लैंड से खेल रहा हूं तो मैं इयन बोथम पे अटैक करूंगा। अगर मैं इंडिया से खेल रहा हूं तो मैं ग्रेट कपिल देव पे अटैक करूंगा। ये मेरा 17 साल की उम्र से माइंडसेट था कि मैंने अपने कप्तान को, अपने मेंटर जावेद मियांदाद को, इनको मैंने इम्प्रेस करना है। और इम्प्रेस मैं कैसे होऊंगा? इफ आई अगर विव बाउंसर अच्छा खेलता है तो मैं इसको बाउंसर ही करूंगा। यू नो, आई वाजंट स्केयर्ड एंड आई थिंक दैट सॉर्ट ऑफ अ हैबिट आई गॉट अर्ली ऑन। सो इफ यू रिमेंबर, मैंने दूसरा अपना टेस्ट मैच का 50 किया था इन चेन्नई। 66 आई गॉट इन 87 टूर एंड नाउ सेकंड न्यू बॉल आया था, कपिल देव वाज बिट शार्प देन। मैंने कहा मैंने इसको नया गेंद से छक्का मारना है और वो उन्होंने हल्का सा नया बॉल मिडल पे किया, अंदर आया, मैंने बस वो ऐसे ही किया तो वो स्टेडियम के बाद। सो ये मेरा बोथम था कि मैंने उसके पाँव 87 में इंजर था उसका, मुझे पता था कि ये इंजर है इसका पाँव। तो मैं इफ यू रिमेंबर एक दो यॉर्कर, एक ओल्ड ट्रैफर्ड भी किया उसको, फिर एक लीड्स में गिरा दिया था। मैं एम ही मैंने उसका विकेटों का नहीं किया, उसके टोस का किया कि मैंने कहा इसको तो फटर करो पहले, बाद में देख लेंगे अगली सीरीज में। सो दैट वाज अ माइंडसेट आई हैड एज अ बॉलर। बड़ा एक लाहौरी किस्म का माइंडसेट आई थिंक कि नहीं, मुझे बस दिखाना ही है, जो बादशाह है उसी पे जाऊंगा उसी पे जाऊंगा मैं। हाँ हाँ, या प्रोबेबली दैट्स अ लाहौरी माइंडसेट, एब्सोल्युटली। मसीम भाई, आपको कभी, अब कितने माशाल्लाह से 30 साल हो गए हैं, आप बोर हो गए हैं वर्ल्ड कप फाइनल के बारे में बात कर करके? नो, दैट्स द मोमेंट यू कांट गेट बोर्ड। इट्स चेंज्ड, इट्स चेंज्ड माय लाइफ, इट्स चेंज्ड द आपकी जनरेशन को सब उस वर्ल्ड कप ने चेंज किया। एंड आई थिंक द बेस्ट थिंग वाज व्हेन वी गॉट बैक, वी डिडंट नो व्हाट वी डिड। जब जीते हैं कोई नहीं, वो 2 बजे तो होटल पहुंचे हैं और मेलबर्न में इन 90s एवरीथिंग यूज्ड टू गेट शट एट ऑन संडे एज वेल। इफ आई वाज संडे 12 वो सब कुछ बंद हो जाता है। तो हमें बस नींद नहीं आई एक्साइटमेंट से, मैं और इजाज रूममेट थे। एंड जब पाकिस्तान पहुंचे हैं तो पता लगा कि व्हाट वी हैव डन। Thousands of people had gathered at the Lahore airport to welcome the national heroes. आई थिंक इट्स द स्माइल जो थी पूरी नेशन में, जहां भी हम गए हैं, चाहे आप हमारी बहनें ले लें, माएँ ले लें, यंग जनरेशन तुम लोग ले लो, पॉलिटिशियंस ले लो, आर्मी ले लो, यू नेम इट, everyone was elated and over the moon. So that then I realized there is something eternal. What's your favorite wicket from that final of the three? हाँ, उन तीनों में से पिक करनी हो तो it got to be Alan Lamb because that's a very difficult delivery to ball. And I remember because Neil Fairbrother played with me, so he told Alan Lamb कि ये राउंड दी विकेट जाएगा, रिवर्स स्विंग हो रहा है, तुम्हें वहां से बाहर निकालेगा। और इसको सिर्फ इफ यू नोटिस, नील फेयरब्रदर ने जब मुझे फेस किया वर्ल्ड कप में, उसका बल्ला पैड के साथ ही रहे, उसने शॉट नहीं मारी मुझे, बिल्कुल साथ रहे। He said that's what was my plan and I've told Lammy that don't push the ball, just block it. And again, it was meant to be. वो डिलीवरी जो प्लान था कि मैं इधर से बाहर निकाल लूंगा, एज या ऑफ स्टंप उड़ेगा। समटाइम विजुअल करो तो ऊपर वाला भी हेल्प करता है, विजुअलाइजेशन करो तो। And yeah, I think that was one of the best wickets according to the situation and the moment, important moment of the game too. और कभी आप में कभी कोई डाउट था कि बोथम आउट नहीं था? वो बाद में बीसी इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन। जब भी मिलते हैं इंग्लैंड में, वी हैव डिनर, मुझे आवाज आई थी, आई हर्ड द नॉइज, बट बाद में रिप्लेस वगैरह में आई थिंक बाद में पता लगा कि वो उसका यहाँ कहीं क्लिप किया था वो बॉल। बट अगेन वो न्यूट्रल अंपायर थे, अगर आप अपील देखो तो इट वाज नेचुरल, इट वाजंट कि फेक अपील थी, या इट वाज इन रिदम एंड इट वाज इन रन बिकॉज़ आई हर्ड द नॉइज एंड दैट वाज इट। टू लेट नाउ एनीवे। एक मुझे इस दफा किसी ने फाइनल पे बात करते हुए जिक्र किया था कि जब आप दूसरी विकेट लेते हैं, सो आप चिल्ला रहे हो, बट फिर एकदम से आप एक सुकून की सांस लेते हो। Was there a pressure coming in? England was in a very good position. You had to take the wicket at that moment. कितना उस वक्त जॉय था और कितना उस वक्त रिलीफ था? पहले तो मैं यॉर्कर करना चाह रहा था उसको, बिकॉज बॉल रिवर्स हो रहा था
मैंने कहा इसको यॉर्कर करता हूँ राउंड दी विकेट, विकेटों में मारता हूँ, या शफल करता है, ये फ्रंट फुट पे आता है, इसके पाँव पे लगे. सो आई थिंक दैट्स वेयर द ग्रेट मैन इमरान खान स्किपर टोल्ड मी, और जावेद भाई भी साथ थे इफ आई रिमेम्बर, मुझे याद नहीं है अब, इट वाज लॉन्ग टाइम अगो. उन्होंने कहा नहीं, इमरान ने कहा लेंथ बॉल करो, यॉर्कर के लिए तैयार होगा और ये फ्रंट फुट पे आएगा. एंड इफ यू रिमेम्बर वो फ्रंट फुट पे आया विदाउट इवन Hmm. थिंकिंग के लेंथ कहाँ पे है. सो वो फिर इनसाइड एज लगी. बट वो जो रिलीफ था, आई रिमेम्बर दैट मोमेंट नाउ, वो था कि आई थिंक वो था कि इट्स डन, जॉब इज डन, दैट काइंड ऑफ रिलीफ. जिस जॉब के लिए आई थिंक मैं वो फाइनल खेला था, जो इम्पोर्टेंट आखिरी ऑलराउंडर तो 11 पे भी आ रहा था बैट्समैन उनका. हाँ बट हाँ. यू नो समटाइम चेजिंग दैट रन डजंट मैटर हाउ मेनी विकेट्स यू हैव, हाउ मेनी ऑलराउंडर्स यू हैव. 9-10 पे आप आओगे तो आप वो स्कोर नहीं हो पाए. दैट वाज दैट साई, डन. Yeah, did you have like did you used to take a different mindset to a final of any tournament? I was looking, in fact, I was writing about the 92 World Cup just a few days ago, and I was looking at your record in finals. Australasia Cup ka final ho, Akram on a hat trick. Perth Challenge का फाइनल हो, फिर ऑस्ट्रेलिया के दोनों कप फाइनल हो, बस जावेद भाई Yeah. वाला मैच भी जिसमें आपने 3 विकेट ली, फिर आपने हैट्रिक ली, and this World Cup final against West Indies. Did you used to go in like with a different mindset, because you always performed in finals? It's a crazy record that you I have. think, yeah, I think big games, including finals, even for Lancashire, I wanted to be the Yeah. man of the match because I knew कि यहाँ पे अगर आपने परफॉर्मेंस दी तो यू विल बी रिमेम्बर्ड. एंड और वो एक हैबिट है, इंस्टेड ऑफ गेटिंग बाउ डाउन बाय प्रेशर कि कल अगर परफॉर्मेंस ना हुई तो लोग क्या कहेंगे या क्या होगा, मैं इतना लंबा नहीं था सोचता. मैं कहता कल फाइनल है, जो भी मेरा प्रेप था, मेंटल, अर्ली सोना, लेट सोना, व्हाटएवर इट वाज, मैंने कहा कल फाइनल है, कल जान पूरी मारनी है, जोर पूरा लगाना है, इसको ये करना है. आई रिमेम्बर 89 में हमारा पहला फाइनल था बीएनएच का एट लॉर्ड्स, लैंकेशर वर्सेस 55 ओवर वर्सेस वाज Worcestershire. वर्सेस्टरशायर. Yeah. Worcestershire. Graham Hick. It was, yeah, pack house. तब जो फाइनल में पहुंचना था ना वहाँ काउंटी क्रिकेट में, वाज अ मैसिव डील. आजकल के लोगों को नहीं पता बिकॉज क्रिकेट इतनी हो गई है. सो वीक्स बिफोर इन द फाइनल लोगों के, लड़कों के सूट तैयार हो रहे हैं, कलर्स के, सुबह इसमें जाएंगे, निकलेंगे इसमें, और रात को जो ऑफिशियल डिनर पे अगर हारे या जीते तो ये सूट पहन के यहाँ जाएंगे. एंड द होल लैंकेशर मेंबर्स एंड द टीम, दे केम ऑन अ ट्रेन, अपने अपने उसमें ट्रेन पे इकट्ठे लंदन उतरे आप ह्यूस्टन में, एंड देन यू गो टू होटल. सो इट्स अ प्रॉपर थिंग, एंड इट वाज पैक हाउस 45, और इट वाज अपेरेंटली मी वर्सेस हिक, जो प्रेस में आ रहा था, जो टेलीग्राफ में, इंडिपेंडेंट में, जो भी टाइम्स था उनका, ऑल द टॉप न्यूज़पेपर्स, बिकॉज हिक ने आई थिंक उस सीजन 400 भी किया था, इफ यू रिमेम्बर, ही गॉट 400, या वो शायद समरसेट से किया था, देन ही मूव टू वुस्टर. सो आई थॉट कि भाई ये दिस इज द गेम, यू नो, हमने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, आगे मैंने कहा यहाँ हिक पे अटैक कर रखना है मैंने. सो मुझे याद है मैंने पहली विकेट ली, नंबर प्लान था कि मैं फर्स्ट चेंज बॉलिंग करूंगा, रिवर्स के चांसेस थे, सन आउट. तब तक लैंकाशायर के लड़के, कप्तान डेविड ह्यूज सीख गया हुआ था कि इसको 3 पे बॉलिंग करानी है ताकि रिवर्स स्विंग अगर हो रहा हो. वो 55 ओवर का मैच था, 55 ओवर्स का. तो आई रिमेम्बर मैंने कर्टस को, कैप्टन को, कॉर्ड बिहाइंड किया. आई वाज स्प्रिंटिंग इन, आई वाज 89 में, आई वाज लाइक पीक. एंड सेकंड बॉल आई बोल्ड हिम अ बाउंसर, ये आया पहला बॉल और मैं गिर गया हूं. वो नो बॉल हो गया बिकॉज बाउंसर नो बॉल था, and it started reversing. So second ball, दो स्लिपें थी, caught behind. And you know, these are the moments you play for. Instead of running away and getting bogged down, कि क्या होगा, instead of think the opposite, कि I'm gonna be the man of the moment or the person of the moment. वसीम भाई, फाइनल्स के बारे में 2 सवाल है मेरे. पहला ये है कि 92 के बाद, या आपने माशाल्लाह से शारजा वगैरह इतनी जगहों पे जीता था, सबसे अजीब सेलिब्रेशन या पार्टी या कोई फंक्शन जो आपकी विक्ट्री के लिए हुआ, उसे थोड़ा डिस्क्राइब करें. देख, अब मैं बातें भूल रहा हूं. So I really have to dig in. अब पाकिस्तान टीम की सेलिब्रेशन वेयर्ड ही होती थी, नॉर्मल तो हो नहीं सकती. द कल्चर वी आर फ्रॉम. आ जाके हमारा क्या होता था ड्रेसिंग रूम में, वो नुसरत की कवाली लगा दो और डांस कर लो, या कोई ड्रिंक, वो जो सॉफ्ट ड्रिंक्स पड़ी हैं वो पी लो,
That was our celebration. अब मैं बाकी चीजें नहीं बता सकता. हम पार्टी करते थे, बाद में निकलते थे दो तीन लड़के छुप के. जब 89 90 में ऑस्ट्रेलिया में पार्टी नहीं करोगे तो कहाँ करोगे? I'm not saying that we were saints. We do went out. We had good time. Yeah, sure. Again, no social media. Social media होता, मैं, वकार, इंजी, मुशी, इजाज, मोइन 6-6 दिन खेलते क्रिकेट पाकिस्तान से सिर्फ. बैन हो जाते. दूसरा मेरा सवाल फाइनल्स की तरफ अब थोड़ा सीरियस था, कि या जो मैं मतलब हम लोग जो मुझ किस्म के लोग हैं जो इंटरनेट पे लिखते वगैरह हैं, तो एक होता है कि हम लोग बहुत ज्यादा टैक्टिक एनालिसिस इन चीजों पे आते हैं. मेरे दो दोस्त इस्लामाबाद यूनाइटेड में खेलते थे आपके साथ, आपने वहां एक ट्रॉफी जीती, आपने आईपीएल में जीती. उन्होंने मुझसे एक बात ये कही कि द इम्पैक्ट ऑफ अ वसीम अकरम इन द ड्रेसिंग रूम इज कि प्लेयर्स को आप टैक्टिक शैक्टिक वो भी कर दो, इफ वसीम कम्स टू यू एंड सेज आई बिलीव इन यू, प्लेयर्स react differently. And they were giving the example कि रियल मैड्रिड जो इतने सारे चैंपियंस लीग जिडान के साथ जीता था, कि वो भी कहते हैं कि टैक्टिक्स से ज्यादा वो जिडान्स प्रेजेंस. आप इस अपनी प्रेजेंस, are you, या do you use that as a coach? How do you value that? How has that helped you? I think as a mentor slash coach slash a senior person in the team, my job is to give confidence to the boys and believe in self. उनमें मैं believe करूं. Because once you pick a player up, you have to back him all the way. Performance or no performance. There's no personal vendetta or personal likes and dislikes. I try to do my job properly. And आके टैक्टिक्स के लिए कोच है, टैक्टिक्स के लिए आपका स्टैट बंदा, और टैक्टिक्स भी आपने प्लेयरों को कम दिखानी है. बिकॉज स्पोर्ट्समैन का जो माइंड सेट है ना, अटेंशन स्पैन इज लाइक अ चिड़ा. यू नो चिड़ा फीमेल no male sparrow. हाँ. There's a reason why. Because male sparrow का भी बड़ा attention span 2 सेकंड का होता है. So sportsman का भी exactly वैसा ही होता है. तो अगर उनको आप आधे घंटे की मीटिंग कर दोगे, वो पहले 20 मिनट भूल जाएंगे. So make sure stats मोटे मोटे तो जो उनको गेम से पहले, and let them express themselves. They know what they're doing. They're professionals. अब आप गलतियां देखते हैं हम, अब जब ये करते हैं, जब अगर आपने 130 चेस करना है T20 में, आपने क्या करना है उसमें? आपने 20 ओवर बैटिंग करनी है. दैट्स इट. The only way you can lose in T20 chasing low total is to give away wickets. वो पता है हमें, बट होती हैं गलतियां. और बाहर बैठ के when you're coach and a mentor, it's even more difficult to control when you are kind of you meant to have a straight face, because in the end you're also a human being. But I've also heard कि आप बिलीफ की तो बात कर रहे हैं, मगर also आपकी एक स्पेशल चेयर होती है ड्रेसिंग रूम में, आपकी लकी चेयर होती है, आपकी कुछ लकी हैबिट्स होते हैं. I've heard you've got some superstitions also. Yeah, I do lots. के उठना नहीं है 6 ओवर से पहले. अब मेरे साथ जो पहले मैच में जीते हैं बैठे, वही बंदा बैठेगा. इस तरह के टोटके चलते रहते हैं. अब उठना नहीं है अगर चेंज कर रहे हैं. इट्स वेरी नॉर्मल फॉर मी एज वेल. जब मैं बैटिंग करने जाता था तो मैं सीधे हाथ का पैड पहले, जब मैं बैटिंग करने जाता था तो वो भी सुपरस्टिशियस थी, मैं सीधा पैड पहले पहनता था. ऑल्दो से फर्क कोई नहीं पड़ा, बट दैट वाज द सुपरस्टिशन. जब आप टीम में आए तो सबसे ज्यादा सुपरस्टिशियस ओवर योर करियर, who would you say was the most superstitious in Pakistan? आई थिंक 90s के लड़के को इतने कोई उनमें नहीं था कोई सुपरस्टिशन. दे वर जस्ट मैवरिक्स. आपस में लड़ते रहो और मैच वाले दिन जीत जाओ अगलों से. दैट वाज इट. यू सी, आई थिंक वी वर ऑल ऑन द सेम एज ग्रुप. इमरान भाई जब गए हैं तो फिर जावेद भाई की जगह मुझे कप्तान बना दिया, विदाउट एनी प्लानिंग, विदाउट making me a vice captain for a year. Never captained a club side before. So yeah, उसके बाद फिर सारे एक एज के थे, तो कोई वो मेंटर नहीं रह गया जो हमें कंट्रोल, इन हमें कंट्रोल इज नॉट द वर्ड, जो हमें गाइड कर सकता. मे बी दैट्स व्हाई द डिफरेंस इज स्टार्टिंग. और हमारे दौर में तो जो भी एक आधे वाइस कप्तान के अलावा जिसको भी बनाओ, वो 2 घंटे बाद तैयार होता था कप्तान बनने के लिए. 2 घंटे बाद. चलो महीना वेट कर लो यार, 2 महीने वेट कर लो, नहीं घंटे बाद मेरी बारी कब आएगी. So before you came onto the scene, cricket में बड़े कम left arm fast bowlers आए हैं. Yeah. Especially those who have been successful. 3-4 गिन के जिन्होंने 100 विकेट भी लियो. After you, there's been, Zaheer Khan, Mitchell Johnson, Mitchell Stark, Trent Bolt, Chaminda Vaas. कितने आए हैं?
Do you see yourself in any of their bowling, or who do you see yourself of in the most? Like after you as a left-arm fast bowler, कौन आपको सबसे ज्यादा अपने आप का रिमाइंड कर रहा है? Look, all the bowlers जिसने आपका नाम लिया लेफ्ट आर्म जो मॉडर्न ग्रेट्स हैं, स्टार्क ले लो, बोट ले लो, जहीर ले लो, Chaminda Was, 800 plus international wickets. He has done well. There must be Ahmer again. Example, when he came, he was nippy, big swing, in swing and out swing, very mentally switched on as a bowler too. So I think मेरे आने से ट्रेंड ये शुरू हुआ कि लेफ्ट आर्मर्स तो चलो आए हैं, आई सपोज वो उसका क्रेडिट नहीं लेता कि उन्होंने फिर जो वेरिएशन शुरू किए हैं. बिफोर मी लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर नेवर बोल्ड अराउंड द विकेट, नेवर डिड. सो आई थॉट टू माई सेल्फ एज अ यंग किड, भाई ये अगर इधर से मैं बॉलिंग करूंगा तो एंगल एक डिफरेंट आएगा राइट हैंड को, तो क्यों नहीं करते. तो मैंने नेट में प्रैक्टिस शुरू कर दी. सो वही नेट में प्रैक्टिस की, फिर काउंटी में मैचेस में खेला तो एंगल डिफरेंट आया. रिवर्स स्विंग का एंगल बड़ा मुश्किल होता था वहां से अगर हल्का सा आपका बाहर निकल रहे तो, स्पेशली काउंटी क्रिकेट में तो बड़े आउट किए. और आई थिंक फिर अंपायर यू सी अब आजकल बॉलर्स को मैं देखता हूं, अब मैं एज अ बॉलर व्हाट्स माय जॉब इज टू क्रिएट अ डाउट यू इन बैट्समैन के माइंड में, क्रिएट डाउट करना है. अब T20 में छिक्के लग रहे हैं, आप उसी रनअप से उसी एंगल से बस भागी आ रहे हो. थोड़ा डायगोनल कर लो, थोड़ा अंपायर के पीछे से आ जाओ, थोड़ा वाइड ऑफ द क्रीज चले जाओ. वो आई सपोज इतनी कुट पड़ती है कि ये वो माउफ हो जाते हैं मेंटली. सो दैट्स दे डोंट डू एनी मोर. वेरिएशंस में रहते हैं. अब फॉर इंस्टेंस हमारा यंग बॉलर हसनैन, अभी हम LPL जीते हैं कैंडी टीम से, ही बोल्ड ब्रिलियंटली इन द एलिमेंट सेमीफाइनल. क्विक 145 150 बैक ऑफ अ लेंथ, यहां से बॉल जा रहा है. तो मैंने कहा अगर ये लेंथ पे बेटा बॉल करोगे तो मुझे बता दो किस विकेट पे तुम्हें मार पड़ सकती है. कंसिस्टेंट नहीं पड़ेगी. मगर वो लेंथ पे 6 बॉलें डालना मुश्किल है. वो ऑटोमेटिकली एक फिर रैंडमली एक स्लो बॉल कर देंगे, उस पर छिक्का खा लेंगे. आई एम ऑल फॉर वेरिएशन, बट जहां पे जरूरत है, नॉट फॉर द सेक ऑफ इट. वसीम भाई, हम स्पेल्स की बात कर रहे हैं. आपकी एक जो नुमाया बात ये भी है कि you've kind of experienced all bowling with all the greats, right? तो थोड़ा सा हमें बताएं, what was it different bowling a spell with Imran versus bowling a spell with Waqar versus bowling a spell with Shoaib? As your bowling partner, what was each of them bringing that was different? How were you adjusting? How were you interacting? It was all fun. I mean, Imran bhai ke saath I was excited because he was always at mid-on or mid-off just telling me what to do in the beginning. मुझे नहीं था पता ये किम ह्यूज की वीकनेस क्या है. या अब अगर आपको याद हो, मेरी पहली 5 विकेटें जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैंने ली थी मिनी वर्ल्ड कप में मेलबर्न में, तो जो अगर मेरी 5वीं विकेट थी वो किम ह्यूज आया था, वो जो पुल करने गया था, वो मैंने नहीं था बाउंसर करना, बिकॉज बाउंसर नो बॉल था, वो इमरान भाई ने कराया था कि इसको पीछे करो. मैंने कहा नो बॉल हो जाएगा. कह रहे कोई बात नहीं, ये करानी जाएगा, कोशिश करो कि इसकी शोल्डर से ऊपर ना हो. सो दैट्स व्हाट आई डिड. एंड देन वो एक और फन था कि अब क्या करूं, अंदर लाओ बाहर लाओ, वेव आ रहा है, खुद थोड़ी पेस करी थी, मेरे से बाउंसर कराते थे वेव को. दैट वाज आल्सो या. वेव का गुस्सा भी फिर आप पे ही आना है. Yeah, but I used to पंगा with Viv, हाँ ठीक ठाक, because दुनिया का बेस्ट प्लेयर था यार. फिर अब पेस आ गई 88 में, तो मैंने कहा अब तो फिर टेस्ट मैच में तो बनता है, कितने चौके मार लेगा, एक फील्डर पीछा खड़े कर देंगे. सो इस तरह का माइंडसेट था. You're also entitled to take the prize wicket of Richards for 39. Pakistan is understandably ecstatic. Akram, the bowler. And Waqar के साथ again he was healthy rivalry. We were good friends off the field. वो जब 24-25 से कप्तान ही हुए हैं, फिर ये वाइस कप्तान हुआ है, फिर बच्चे थे, we were kids. But yeah, it was a healthy competition. We never thought कि यार वो आउट ना करे. We thought कि वो 5 करेगा तो मैं अगली इनिंग में 5 करूंगा. So that's kind of healthy competition. It was natural in both of us. We were attacking bowlers, attacking personalities. And प्रॉब्लम कप्तान को जब आती थी कि एंड में किसको दूं, जब 3 रह जाते थे, तो फिर डील ये होती थी कि दोनों को दे देंगे, दोनों जो कर गया वो कर गया. वो एक ओवर ही लगता था हमारे दौर में, 1 या 2 ओवर, बारी नहीं थे आने देते. और टेल एंडर को बॉलिंग करने का बड़ा इजी तरीका है. उसको बैक ऑफ लेंथ आके नहीं मारनी आपने, उसको आपने डराना है. बाउंसर किया, एक इधर को कर दिया,
एक अगर राइट हैंड राउंड द विकेट वाइड जाके एक इधर को किया, मतलब मारा नहीं बट ट्राई तो करनी है, इधर किया वो इधर गया थोड़ा, इस तरह की चीजें करनी है, यॉर्कर कर दिया। अब बैक ऑफ अ लेंथ नहीं करोगे, 2-3 चौके मार जाएगा तब तक वो आपको, इन माय ओपिनियन। Shoaib के साथ was fun. Again, I took a role what Imran, me and Waqar used to talk to each other कि यार क्या करूं, बाहर निकालूं, अंदर लाऊं, फील्डर ले लूं, we were एक दूसरे को बताते रहते थे। और शोएब के साथ मैंने वो रोल किया जो इमरान भाई ने मेरे साथ किया था। और शोएब was तेज तो नो डाउट तेज तो था बहुत। I mean, he was scary तेज। नेट में उसकी बॉल ही नजर नहीं थी आती यार, यूज टू होना पड़ता था पहले 5-6 गेंदे, तो हम उस लेवल पे भी। Was he? आपके ख्याल, सॉरी उस्मान, अब जस्ट लास्ट थिंग कि आपके 2 टीनेज बेटे रह चुके हैं, उनको पालना ज्यादा मुश्किल था या शोएब को बॉलिंग कराना एज ए कप्तान? मैं शोएब को बॉलिंग कराना बहुत आसान था, बॉलिंग में बात मानता था, बिकॉज उसके फायदे की बात होती थी, विकेट आ जाता था कि विकेटें मिले। ऑफ द फील्ड शे भी था, ऑफ द फील्ड पार्टी की उसने बड़ी। फिर वो लॉट ऑफ इंसिडेंट्स, हमारे एक चेयरमैन आ गए जिसने इनको बेटा बना लिया, तो वो बात की बातें। बट एज अ बॉलर, एज अ कैप्टन, ही वाज अ ट्रीट टू वर्क विद। पेस थी ना, सारे घबराए होते थे, और ये एंजॉय करता था कि मैं डरा रहा हूँ। वो इंडिया से जब शुरू हुआ ये टूर से, so yeah, I was every partnership had its moment, but all fun moments. Who at their peak was the faster bowler between Waqar and Shoaib? अगर शेयर पेस देखी जाए, कंसिस्टेंट देखी जाए, तो मे बी शोएब अख्तर। बट अगर आप पेस देखना चाहते हो, कंसिस्टेंट, सॉरी, शेयर पेस, तो शोएब अख्तर है। कंसिस्टेंसी देखना चाहते हो पेस की, नॉट जस्ट वन स्पेल और वन इनिंग्स और वन, वो वकार था। He used to sprint for 30 meters, man. Every ball, all day long. Sprint. Not jog, not, acceleration, nothing, just pure sprint for 30 meters every day. So he was consistent. And how does Zahid ne itna khela nahi, but you captained him in that 96-97 series in Australia that you guys won. How quick was he? तेज था यार, वो भी तेज था। He was par with Shoaib, definitely. उसने वनडे खेले हैं मेरे साथ एज ए कैप्टन, और बट सारे बैकफुट पे होते थे। उसने आई थिंक वहां पे आउट किए थे शायद 2 या 3 होबार्ट में, जब हमने 149 डिफेंड किया था। अजाज को भी बॉलिंग करा दी, उसको भी बॉलिंग करा दी, एक और जमशेद आया था, उसको भी बॉलिंग करा दी। सबको करा दी। क्या वाज द बेस्ट टूर? ना कोई फिट था, सईद भाई भी वापस आ गए थे, और मैंने भी कहा भाई इस पूरे 1.5 महीना कोई प्रैक्टिस नहीं होगी, प्रैक्टिस में सिर्फ फील्डिंग होती थी, दैट्स इट। थोड़ी नॉकिंग, थोड़ी फील्डिंग, चलो जी। और कोच भी बेस्ट थे हमारे, मुशी भाई, मुश्ताक अहमद, ग्रेट गाय, मुश्ताक मोहम्मद, आई जस्ट मेट हिम रिसेंटली। He was great on and off the field, good fun, good. So we did fun. We were looking forward के मैच हो। इंजरी से कोई घबरा नहीं था रहा ना, I wasn't worried about इंजर है तो इंजर है, क्या कर सकते हैं। Maybe that's why we won, the only time. Yeah. When do you think, these are two but quick questions, when do you think, one, you bowled at your fastest over your career, and when do you think you were the best bowler that you, like, in your own opinion, when you were bowling at your absolute best? I think the world got to know me where that was 89 Tour Australia. Because I knew, I've been told by my seniors like Javed Miadad, Mudassar Nazar, Zed Bhai, Skipper, all these guys, Kadir Bhai, Mohsin Hassan Khan, great player. इन्होंने बताया था कि बेटा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्मेंस जब होती है ना किसी भी क्रिकेटर की, उसका दुनिया में नाम ऐसे टॉप पे आता है। Because Australia was one of the toughest, still is toughest countries to play because of the conditions and the pitches and their batters techniques. So मैं 88 मेरा पहला साल था काउंटी का, 6 महीने मैंने काउंटी खेली, फर्स्ट क्लास भी, 60 ओवर, 55 ओवर, 40 ओवर, I did well. And then that showed in my game when I arrived in Australia. 11 विकेटें, 100, 5 विकेटें, 50, 86 my one day highest. फिर नंबर 3 पे बैटिंग की सिडनी में जाके, 40 वहां भी किया मैंने. So yeah, from there onwards, I think for 3 years I was right at top of the world. विकेटों में भी, टेस्ट क्रिकेट में भी, वन डे में भी. So those were the time. फिर उसके साथ थोड़ी अकल भी आती कि बॉलिंग में कहाँ जोर लगाना है, कहाँ नहीं लगाना. अगर पार्टनरशिप है टेस्ट क्रिकेट में
तो कंटेन करो, विकेट मिलती है तो देन स्प्रिंट इन, वो साथ साथ फिर सीखते गए। एंड व्हेन डू यू थिंक आप अपनी मतलब स्किल्स और मतलब जो एक कंट्रोल था अपनी बॉलिंग के ऊपर, वो उसका पीक किस दौरान था? आई थिंक वो पीक शुरू हो गया था अबाउट 24-25 वर्ल्ड कप के फौरन बाद से। फिर नया गेम भी सीखना शुरू कर दिया ना। पहला 92 93 ऑनवर्ड्स नया गेम पे कंसंट्रेट हम दोनों नहीं थे करते, मैं और वकार। हम पुराने बॉल का वेट करते थे, आके जोर लगा देते थे, नेचुरल स्विंग हो गया, बाउंसर पे हो गया, नए गेंद से 2-1 विकेटें मिल गई। बट आई थिंक 93 94 जब रिबेलियन के बाद में गया हूँ, जब मलिक साहब कप्तान बने हैं, जब मैंने पहले मैच में 11 विकेटें ली हैं, तो वो तब तक मैं दोनों स्विंग नए बॉल से वकार भी सीख चुका था। वो भी दोनों ने एक दूसरे से बात की कि यार इट्स अबाउट टाइम यू शुड लर्न द न्यू बॉल, एंड वी जस्ट स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग इन नेट्स, एंड या कि ये लेंथ मारनी है, रिस्ट ये यूज करनी। फिर आउट स्विंग मैंने सीखनी शुरू की। फिर आउट स्विंग मुझे याद है 93 में जावेद भाई कप्तान थे, वो हम ट्राई सीरीज बड़ी बुरी तरह आ रहे थे। कभी वो हमने सिमंस को बॉलर बना दिया था, अगर तुम्हें याद हो तो। 4 for 3. रिमेम्बर? 4 for 3. हाँ, 10 वो ओवर 4 3 रन सिमंस। 10 overs, 8 maidens, 4 for 3, the most economical bowling figures in a completed spell in all one-day international. तो वहां मैंने आउट स्विंग सीखनी शुरू की हल्की हल्की नेट में। और फिर आई थिंक मैंने वहां 3 आउट भी किए थे एडलेड में आउट स्विंग से। तो उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता गॉट द हैंग ऑफ इट। तो इसी आपने फिल सिमंस का जिक्र किया, तो इसी टैंजेंट पे मैं सवाल करना चाहूंगा कि देखिए, अब जैसे ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स हैं या साउथ अफ्रीकन हैं, तो उनकी टीम हमेशा होता है वो एक प्लान से खेलते हैं, जीतते तो उसी पे होता है, हारते हैं तो दूसरी टीम बेहतर थी। पाकिस्तान हमेशा एक ऐसी टीम है कि वो जीतने पे ऑल टाइम 11 को भी हरा सकती है, और जीता हुआ मैच वो गली के बच्चों से भी हार सकती है। यू डेफिनेटली बिन पार्ट ऑफ मैचेस जो आप बिल्कुल जीत रहे हार गए, हार रहे जीत गए। हाउ डिड यू मतलब उसको, उस उतार चढ़ाव को, जो पाकिस्तानी टीम का जो क्रेजीपन है, आपने आपके ख्याल में हाउ डिड यू डील विद दैट? मतलब highs and lows obviously took a patrol, but you guys had to face that quite often. We are Pakistanis, or our players are Pakistanis. Whatever Pakistanis, we are part of that culture. So what's consistent in Pakistan? मुझे बता दो। और कोई चीज कंसिस्टेंट है तो पाकिस्तान क्रिकेट भी कंसिस्टेंट हो जाएगी। सो हम प्रोडक्ट है ना इस कल्चर के। तो अप्स एंड डाउन्स एंड नो कंसिस्टेंसी। हारना हो तो हाथ खोले हो जाएंगे, जीतना हो तो आउट ऑफ द ऐसा मैच जीतेंगे कि आप सोच नहीं सकेंगे कि ये मैच पाकिस्तान जीत भी सकता है। वी न्यू के वी आर इनकंसिस्टेंट, हमें पता था, बट अगेन दैट्स अपेरेंटली पार्ट ऑफ आवर डीएनए। दैट्स व्हाट आई थिंक। डजंट मैटर हाउ मच प्लानिंग यू डू। यही मैं पूछ रहा था कि क्या आप अपने खिलाड़ियों को भी कह देते हैं कि बेटा देखो, होना जो हो जाएगा, यू नो, वर यू अलाउइंग फॉर दैट कि हाँ ठीक है आज बुरा दिन आ सकता है? या एंड आई बिलीव इन आवर रिलीजन। हम एंड में यही कहते थे कोई नहीं, ऊपर वाले की मर्जी है। एंड दैट्स आई थिंक वन पॉजिटिव वे टू लुक एट इट। यू ट्राइड योर बेस्ट, if results don't go your way, you can't do anything about it. You have to just move on quickly. And I think as a nation, we have to learn that as well, especially young generation. कि like I said, कि हर चीज पे कमेंट करना जरूरी नहीं है, और फेलियर्स आएंगे, but how to move on, learn from your mistakes. You will make mistakes. Everybody will make mistakes. It's natural human thing, but learn from them. Okay, I think we're probably coming towards the end. So I had a few, I think Emma and I both have a couple of questions maybe left. Sure. This I ask you every time I interview you. I ask you, and you always give me different answers because you don't ever remember. But what are your? I was going to ask you top 5 favorite wickets that you've taken, but I know you won't remember 5. So just give me your top 2 or top 3 wickets It's like that you. finding a freaking needle in a haystack. I retired 20 years ago. Again, if I straight away एक विकेट मेरे ज़हन में अगर आती है अर्ली डेज में, तो वनडे में केपलर वेसल्स की आती है, वो जो बोल्ड किया था मैंने उसको। On picking up those quick runs. Oh, and he's knocked the stumps out of the ground again. Wait, 85 वाली वर्ल्ड सीरीज की गेम में, मिनी वर्ल्ड कप वाली, okay. या मिनी वर्ल्ड कप की। Okay. एक वो आती है ज़हन में, and then if I go after that, I think 87 वर्ल्ड कप में मैंने विव को बोल्ड किया था कराची यॉर्कर पे। Bowling by
Wasim Akram. Okay. Stumped Cartfield away, long way. That's I remember. Dravid's 99 I remember. That bowled. Uh, अब कौन सी जेन में आ रही है इंग्लैंड फिर मुझे याद है एक विकेट लारा की विकेट याद है लारा को कॉट बिहाइंड किया था सचिन को टेस्ट मैचों में कम ही हम 2 दफा तो खेले हैं टेस्ट सीरीज एक दूसरे से दैट्स काइंड ऑफ रिग्रेट आई हैव के अगेंस्ट वन ऑफ द ग्रेट्स ऑफ द गेम वी डिडंट प्ले टेस्ट क्रिकेट फॉर 10 years 89 में खेली फिर 99 में खेली सो दैट्स अ बिट ऑफ 99 बट या सो बड़े प्लेयरों की विव की विकेटें याद हैं एलन बॉर्डर की याद है सनी गवास्कर को मैंने एक दफा आउट किया हुआ है स्लिप में हैदराबाद दक्कन के वनडे में वो पता है टाई हो गया था और हम हार गए थे वो मैच 87 में वो जो हैदराबाद बाउ ने जो रन लिया था एंड जी में फॉर नो रीजन नहीं उससे पहले मैसेज गया है एक बॉल पहले के 2 ले लेने हैं स्कोर बराबर कर देना अगर विकेटें नहीं गिरेंगी तो हम ये मैच जीत जाएंगे एक बॉल पहले मैसेज गया है पूरा गेम रुकी है पैक हाउस है हम बच्चे थे हम इमरान भाई को मैसेज वाले को जावेद भाई सारे सीनियर प्लेयर अंदर गया है पानी लेके पूरा कादिर भाई ने कहा हाँ 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 और अगली गेंद पे टिक्का ले लिया टिक्के पे आउट हो गए हम एक्स्ट्रा हमारा विकेट गिर गई और तब जो हैदराबाद का ड्रेसिंग रूम था वो रेनोवेट हो रहा था तो एक बड़ा कमरा था उसमें एक टेंट लगा हुआ था इधर इंडियन टीम थी इधर पाकिस्तान टीम थी so there was no privacy प्रॉपर तंबू लगा हुआ था शादियों वाला आपने 5 वर्ल्ड कप्स में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है आई एम गेसिंग 92 आपका फेवरेट होगा बाकी इन 5 को आप रैंक करें और थोड़ा थोड़ा हमें उनके बारे में बताएं क्या क्या एक्सपीरियंस था क्या मेमोरीज हैं 87 की मेमोरी ये है कि आवर होटल्स वर पैक्ड लॉबीज वर पैक्ड विद फैमिलीज यंग गर्ल्स बच्चे लॉबी में जब हम उतरते थे या प्रैक्टिस पे या बाहर निकलते थे इट वाज पैक्ड एंड एवरीबॉडी मुझे हर कोई पहचानता था लाहौर में हम आई थिंक अवारी में भी वर स्टेइंग कराची में मे बी इट वाज शेरटन देन आई थिंक या पीसी वन ऑफ देम नीचे उतरो जहां जाओ सिग्नल पे खड़े हो एंड वी लॉस्ट द सेमीज बिग डिसअपॉइंटमेंट बट दैट वाज द फर्स्ट टेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कप कि वर्ल्ड कप होता क्या है एज अ क्रिकेटर एंड देन 92 वाज अगेन लाइक यू सेड वो तो भूल नहीं सकते वो तो जीते थे हम 96 we had a very good team one player came late into the squad and we had to I think drop Saklan to accommodate them in playing 11 and then obviously I got injured now but वो injury मेरा वो टीम का वो एक बंदे का कसूर नहीं है वो भी हम जीत सकते थे आखिरी ओवर में वकार को काफी मार पड़ गई वहां जडेजा ने मारा and 99 I think was the best team we had in the World Cup अगर आप बैलेंस देखा जाए तो me, Waqar, me, Shoaib, Azhar and Razak, they both were nippy, 140 and could bat at any number, very safe fielders. 4 हम fast bowlers थे, Saklan था 5वां, proper 5 fast bowlers we had. And then at times अगर अफरीदी भी squad में था, Waqar भी था, Malim, so we had a good team. Unfortunately final में we did whatever we could, but we weren't good enough. अगली टीम को भी praise करना जरूरी होता है वो अमरूद बेचने नहीं आते वो भी खेलने आए हैं इसी वर्ल्ड कप पे एक मेरा सवाल बहुत सालों से था क्या ये रजाक को एज अ पिंच ब्लॉकर ये जानबूझ के आप लोग की एक थ्योरी थी और उसके पीछे क्या सोच थी नहीं तुक्के में कर दिया था ऑब्वियसली थ्योरी थी यार क्या बात कर रहे तू नहीं ये आइडिया था हमारे चेयरमैन एट द टाइम खालिद महमूद साहब का बिकॉज ये उनकी क्लब पीएनटी से खेलता था तो मुझे उन्होंने कहा कि ये ऊपर भी बैटिंग करता है तो इसको ट्राई करें तो फिर नेट में इसको हमने नया बॉल से ट्राई कराया तो फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 पे खेलेगा उसने कहा जी हाँ आई एम रेडी सो या दैट वाज द आइडिया सो समटाइम्स यू हैव एन आइडिया लोग आपको आइडियाज देते हैं हम करो जरूर सुनो जरूर और कई दफा आपके दिल को लगता है गट फीलिंग को है कि भाई ये चल सकता हो सकता है अगर नीयत साफ है तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो आपका आइडिया चलता है तो would you rank 99 above 87 did you enjoy that more I think that's a team we did we were the firm favorites wherever we went we had the support England is a small place you travel by bus the whole team is there families are there music is on you know practices were fun so yeah we had a good time we didn't practice before the semi final पूरा पैरिस में मैं इनको आल्टन टावर्स ले गया था टीम को तस्वीर आप लोग हैट्स में
Yeah, and the idea was that we've been playing month and a half, practicing every day. Day before the semi-final, we all prepared, so I might as well have a day off, and that Nice. worked in the semis. Yeah, और My आखिरी में 2003 बहुत uh-huh. वर्ल्ड कप 2003 वर्ल्ड कप में बहुत circumstances थे. Waqar is a dear friend of mine. I don't want to criticize him, but I think, in my opinion, can be wrong at the time. उसकी टीम प्लेइंग 11 में जगह नहीं थी. अजहर महमूद को ड्रॉप किया या जिसको भी किया हमने. Plus we didn't start well. We did okay against Australia. Pehla game, they were 90 for 4. And then obviously Waqar wanted कि एंड में भी बॉलर रख ले. शोएब की ओवर उसने हटा दिया, तो फिर हम एंड्रू सिमंड्स भाई के हाथ चढ़ गए. उन्होंने कोई 140 किया, मार मार दुम्बा बना दिया. My last question to you, Wasim, I asked Sure. you about your favorite wickets. Was what are the wickets that you didn't get from the umpire that annoyed you the most? आपकी करियर में काफी, यानी माशाल्लाह, अभी कोई दिखा रहा था तो जिमी वेस्ट एडम्स इंडीज was के the 2 blue. टेस्ट मैच, एक तो स्ट्रेट अवे गयाना का टेस्ट मैच जो 2000 में हुआ था यार. 131 दफा आउट किया उनको. लेग बिफोर, कॉट बिहाइंड, वो पता नहीं क्या क्या नहीं किया हमने, बट नहीं माने. और फिर सकलैन भी उनके साथ मिल गया. 2 रन आउट, एक भी नहीं, 2. आई वॉज फ्यूरियस. मैं कहीं थर्ड मैन या वहां खड़ा था. मैंने वहां से जो मैंने कहा है, मैं अब कह नहीं सकता कि मैंने एग्जैक्टली क्या चीखें मारी है वहां से, बट जीसस, इट वाज फ्रस्ट्रेटिंग. I mean, a DRS होता तो it would have been so much fun यार. But again, जान के तो नहीं किया होगा, but एक आधी गलती हो सकती है, 2 हो सकती है, 36 नहीं हो सकती यार. In one game, in one innings. Okay, I'm at least done. Ahmed, do you have anything else, or are we good? Yeah, I did. just आखिरी सवाल मेरा वसीम भाई आपसे आपकी Sure. लेगेसी के बारे में था कि you played in India, and then also at the same time, I think मेरी lifetime में I've not seen any Pakistani who's been more celebrated in India. जब Indians बैन भी हो गए, आपका काफी देर तक वहां आना जाना होता था. तो I just wanted you to talk a little bit about that, कि ये आपने जो experience किया, what was that like, and now that you're seeing things change, how are you feeling about that? I spent about 8-9 years in India, about 6-7 months a year for 7-8 years. And I got to know the country. I got to know the culture. I got to know the food. It's a massive country. It's a huge country. Every state is different. Every state have a different food. And I have lots of friends there. I miss going to India. And first of all, I forgot to congratulate India. कि वो चांद पे, south side of the moon they landed. Big deal, massive deal for mankind. बट मैं मिस करता हूँ इंडिया को. कल्चर एक है, जुबान एक है, खाना एक है, बट डिफरेंट. यू नो व्हाट आई मीन? फूड इज सिमिलर बट येट डिफरेंट. द ओनली थिंग आई थिंक इंडिया में जो साउथ का खाना है, आई रियली एंजॉय द वेजिटेरियन ऑप्शंस. एंड लाइक आई सेड, आई हैव वेरी गुड फ्रेंड्स, एंड इट्स अ वेरी फैसिनेटिंग प्लेस टू बी. एंड आई अंडरस्टैंड आजकल सोशल मीडिया पे से हर एक को ओपिनियन का राइट मिल गया है. फेयर कॉल मिलना चाहिए, हर एक का होना चाहिए. बट पाकिस्तानी इंडियंस याद रखें कि पाकिस्तानीज आर पेट्रियोटिक अबाउट देयर कंट्री एंड इंडियंस आर पेट्रियोटिक अबाउट देयर कंट्री. सिंपल. सो बिला वजह एक दूसरे पे अटैक करना इज जस्ट, आई थिंक इट्स टू मच. इट्स जस्ट वेस्टिंग योर अननेसेसरी एनर्जी. यू कैन वो पॉजिटिव वाइब्स फैलाओ. आई थिंक दैट्स व्हाट माय मैसेज टू इंडियन पाकिस्तानीज आर. इट्स अ ग्रेट कंट्री टू विजिट. That's the perfect message for us to end this conversation. Wasim bhai, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. It's a dream come true for me. I hope our audience enjoys it as well. And thank you for taking out the time. Thank you guys, and good luck with this new venture. I think you'll do very well. Cricketing brains भी हो, cricket का पता है, sense of humor भी है. So I wish you all the best. एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी